Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to the Performance and Career Management class. Today we are going to discuss our seventh chapter, that is regarding implementing a performance management system. I hope you have gone through the webinar that was already shared to you on the WhatsApp group, and you might have an idea of how to change the system and what are the problems while implementing a performance management system. Now, if you have an idea to implement the performance management system, you might have known in that webinar that the change is very important, and for the change it is very important to implement a performance management system. So let's have an overview of the performance management, of implementing a performance management system, and then we will go into the details of that performance management system. Implementing a performance management system, preparation, communication plan and appeals process. Prepared by Devika Diosaminathan, D201510700752. Preparation. Successful implementation requires wide organizational support and acceptance. Also, need to gain system buy-in through communication plan regarding performance management system. Timing of information is critical. Training program for Radar's pilot testing system and ongoing monitoring and evaluation to show benefits. Expect a lot of questions that deserve answers. Increase in political behavior of all kinds. Active resistance. What to communicate? What is performance management? How does PM fit into our strategy? What's in it for me? How does it work? What are our roles and responsibilities? How does PM relate to other initiatives? Be aware of cognitive biases when communicating. Employees will tend to suffer from selective exposure, exposing themselves only to ideas they already agree with. Selective perception, perceiving things to mean what they expect them to mean. Selective retention, remembering only things that they agree with. Communication, overcoming biases and real resistance. 1. Consider employees. Involve employees in system design. Show employees how their needs will be met. 2. Be proactive. Strike first. Provide facts and consequences. 3. Communicate effectively. Put it in writing. Multiple channels of consistent communication. Credible communicators say it again and again. Include an appeal process. Amicable/non-retaliatory resolution of disagreements increases perception of system fairness. Employees can question 2 types of issues. Judgmental, validity of evaluation. Administrative, whether policies and procedures were followed. Recommended multi-level appeals process. Level 1, internal/local organization. HR reviews facts, policies, and procedures. HR reports to supervisor/employee. HR attempts to negotiate a settlement. Level 2, external/higher level organization. Arbitrator, panel of peers and managers, or high-level manager, final decision. Conclusion. Careful attention to these pre-system implementation steps will help improve the success of the system. Thank you and have a nice day. Okay, G, so you have an overview of what actually the implementation of a performance management system is. So as it has already been shown in the video, first of all we have to do some preparation, and for the preparation we must have the communication plan so that we can
we can basically train the trainers properly, and then there should be the appeals process, and then there is rater training programs, and then there is pilot testing, and the ongoing monitoring and evaluation process, and the online implementation. So while looking into all these aspects, you might have noticed that this is basically the precautionary or prerequisites to implement the performance management system. This is not actually the performance management system, but in this chapter we are going to discuss the aspects that are related to the parts before implementing the performance management system. So all these, while if we talk about preparation, if we talk about communication plan, if we talk about appeals, the rated training programs, pilot testing, so all these aspects are before implementing the performance management system. So first of all, let's come to the preparation part. Now if we talk about preparation, these basically need to gain system buy-in through communication plan regarding performance management system. It also includes appeals process. Then we have the training programs for raters, and then it also includes pilot testing system. Now अब जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन के अंदर हमें बेसिकली ज़रूरत होती है गेम सिस्टम की। इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन प्लान जो भी होता है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हम उसकी सारी की सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये हमने किस तरह करना है, लाइक अगर हमने कम्युनिकेशन प्लान बनाना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो हम कैसे करेंगे। अगर किसी ने अपील करनी है उसके खिलाफ तो वो किस तरह से होगी। इसी तरह से हम ये चेक कर रहे होंगे कि अगर अपील्स के अंदर भी जो है वो किस लेवल की अपील वो कर रहा है, तो इसके अंदर भी हम उसको इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वेटर्स के, उसके जो वेट कर रहा होता है, तो उसको हमने किस तरह से ट्रेन करना है। और फिर हम पायलट टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये तमाम का तमाम जो हमारी प्रिपरेशन है या हमारा ये जो प्लान है ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, और जो मॉनिटरिंग होगी या एवेल्यूएशन होगी उसकी क्या क्या हमारे बेनिफिट्स होंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो सब की सब जो हैं वो इसके अंदर आती है, प्रिपरेशन फेज़ के अंदर आती है। तो हम प्रिपरेशन फेज़ के अंदर जो है वो इसको देखेंगे। उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन प्लान आंसर आ जाता है। कम्युनिकेशन प्लान इटसेल्फ जो है वो क्लियर है कि हमने अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अवेयरनेस देनी होगी जो इसको रेट कर रहे होंगे और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको, कि उन्होंने इसको फिल कैसे करना है। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ इसलिए होती है कि अगर एम्प्लॉय को ये नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली लिखना है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक तरीके से बता नहीं पाएंगे। इसी तरह से जब हम बात करते हैं रेटर्स की, तो ये रेटर्स के लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि उन्होंने रेट किस तरह से करना है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है जो वीडियो देखी थी, उसमें बहुत सारे ऐसे आप उसको ये कह सकते हैं कि एरर्स थे रेटिंग के, जो कि नॉर्मली रेटर्स कर रहे होते हैं। मीन्स कि अगर वो एक इंसिडेंट है जिसमें उसने वो शाम तक बैठ गया, तो वो डिटेक्ट नहीं करता कि वो पूरे के पूरा साल जो है वो वहाँ पर बैठा होगा, और उसका जो है वो हम एक दिन की बेस पे हम पूरा का पूरा जो है वो उसका परफॉर्मेंस का अप्रेजल जो है वो चेंज नहीं कर सकते या उसकी रेटिंग चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन प्लान के अंदर आती हैं। अब व्हाट एक्चुअली कम्युनिकेशन प्लान आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्चुअली द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़, what actually the performance management system is, then how does performance management system fit into our strategy. Now in the first chapter we have already discussed what actually the performance management system is. So we are in this communication plan we are basically going to tell the audience that what actually our performance management system is. Then in the next chapters, especially regarding a strategic plan, we have already discussed that what actually the strategic plan is and how do we align that strategies to the performance management system and to the employees. So the second part basically answers
that chapter, that how does performance management sit our strategy. Then what's in it for me? And what's in it for me is basically include the benefits that we are going to give to the employees. Then how does it works? Here we basically tells the employees that why it is important and what actually how actually it works in our organization. Then what are our roles and responsibilities? Here we basically tells them that what are their roles and what are their responsibilities. We basically make it clear to them that why it is important to our organization in the strategic portion, and through that strategic portion we basically tell them that what they should do and what not to do. Then in the last portion we basically answers how does performance management relate to other initiatives, that what should be the other initiative program in that. So this is basically the communication plan that is very important to communicate all the audience, whether these are the whether this is the higher management or whether there is the an immediate boss or whether there is an employee that is going to perform that basically. So this is basically the communication plan. Now also if we talk about the communication plan, and especially when we talk about the system, it is very important when we talk about the biases, because while just communicating all this thing, still there are biases, there may be the cognitive biases that can affect the communication's effectiveness. So what are those biases? Let's see. Here basically there are three things. First one is the selective exposure, the second one is the selective perception, and the third one is selective retention. Now first, selection exposure is the tendency to expose our minds only to ideas with which we already agree. Those employees who already agree that performance management is a good idea may become involved in the communication plan activities, including reading about the system and attending meetings describing how the system works. On the other hand, those who do not see much value in performance management may choose not to read information about it and not to attend meetings related to performance management. The second one is the selective perception, which is a tendency to perceive a piece of information as meaning what we would like to mean, even though the information as intended by the communicator may mean the exact opposite. Someone who believes performance management is about only rewards and punishments may incorrectly interpret that receiving formal performance feedback at the end of each quarter translates into receiving a pay or increase a bonus. Now let's come to the third one, which is selective retention. It is a tendency to remember only those pieces of information with which we already agree. If an employee perceives his employer as vindicative, that employee is not likely to remember information about how the appeals process works or about other fair and equitable aspects of the system. Selective exposure, selective perception, and selective retention biases are pervasive and could easily render the communication plan ineffective. Fortunately, there are several ways to minimize the negative impact of these biases and therefore help gain support for the system. So these were basically the cognitive biases that actually affect communication effectiveness. So to minimize the effects of cognitive biases, we have some other ways also. The very first one is to consider employees. Let's see. Okay, so the very first one is to consider employees, involve employees in system design, then show how employee needs are met. Now first of all, we have to consider our employees and we have to involve them in our system design, and we have to show them that how their needs can be met. Then the second one is the positivity.
We have to emphasize the positive views, credible communicators, and we have to strike first, and we have to create the positive attitude. Then we have to provide facts and consequences in a positive manner. The third one is to repeat, document, and be consistent and put it in writing, and use multiple channels of communication to tell the employees that what we are going to do and how they are going to basically fill the appraisal form, and when how are they going to just fulfill all the requirements regarding performance appraisals. Then say it and then say it again. We have to say again and again just to tell them, just like marketing. We have to just feed that thing in their mind that how actually the performance appraisal process are going to be taken. Now let's discuss about the appeals process, because once the cognitive biases are being removed and once the preparation has been done, once the communication plan is being finalized, so then there comes the appeals process. Appeals process is basically the right given to all the employees, बिकॉज जब हम अपील प्रोसेस में जाते हैं, जब लेट सपोज के अगर किसी को एतराज़ आता है तो वो अपील प्रोसेस के अंदर जा सकता है, और उसके अंदर भी हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं जिसके अंदर रहते हुए उसको ये तसल्ली हो जाती है कि ये जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल या जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये बिल्कुल फेयर चल रहा है। तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो है वो अपील्स प्रोसेस ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को, ये हर एम्प्लॉय को हर पॉसिबल होता है कि अगर उसको ये फील हो कि ये पूरा का पूरा ये सिस्टम उसकी जो परफॉर्मेंस अप्रेज की गई है अगर ये ठीक नहीं है, तो वो एक प्रोसीजर होता है जो उसमें जाके अपनी तसल्ली करा सकते हैं। तो अपील्स प्रोसेस के अंदर जो है वो बेसिकली हम प्रमोट करते हैं बाइंग टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर एमिकेबल होता है, नॉन रिटेलिएटरी होता है और रेजोल्यूशन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इसमें। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? जब हमने पहला लेक्चर हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमने ये बात की थी कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, अगर एम्प्लॉय को ये यकीन नहीं है कि ये जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा, तो अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। वो खुद सेटिस्फाई नहीं होगा, वो खुद मोटिवेटेड नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हमने एक फार्मूला भी स्टार्ट के अंदर पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि डिक्लेरेटिव नॉलेज ज़रूरी है परफॉर्मेंस के लिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज ज़रूरी है, प्रोसीजरल नॉलेज ज़रूरी है, और लास्ट में हमने मोटिवेशन पढ़ी थी, जो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इन केस अगर मोटिवेशन हाई नहीं होगी तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस की जो है वो ज़ीरो पे जा सकती है। तो इस वजह से हम अपील्स रखते हैं जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल दिस सिस्टम इज़ फेयर, जस्टिफाइड, measurable, and he has the right to appeal, and we in the appeal process we basically assure him that we have done this in the justifiable manner। अब इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि उसको मीनवाइल जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह से चल रही हैं। दूसरा फ़ायदा उसको ये हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको वो चीज़ क्लियर नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम वो उसको उस तरीके से करने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल ही इस तरह से है कि लाइक मैं अगर आपको पढ़ा रहा होता हूँ या आपके नॉर्मली टीचर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं, आपका एग्ज़ाम्स लेते हैं, एग्ज़ाम्स लेने के बाद जो है वो आपके मार्क्स आते हैं। अब जब मार्क्स आते हैं तो आप एक्सपेक्ट बाद ज़्यादा कर रहे होते हैं और आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। बाद इस तरह से होता है कि आपके मार्क्स आप कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हर एक का सिस्टम जो है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का वो डिफरेंट होता है। तो जब एक दफ़ा आपकी मीटिंग होती है और जब आप एक दफ़ा जो है वो क्लैरिटी के साथ उससे पूछते हैं कि अच्छा क्या वजह है कि मेरे मार्क्स कम हैं, क्या वजह है मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं हैं, तो वो फिर आपको क्लियर करते हैं कि इस वजह से आपके मार्क्स कम हैं। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप वही काम करते हैं तो आप इन चीज़ों को माइंड में रख के करते हैं और वो आप चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अपील्स प्रोसेस जो है वो भी इसीलिए होता है। इसके अंदर नॉन रिटेलिएटरी होता है। हम इसमें जो है वो कोई एश्योर करते हैं हर एम्प्लॉय को कि हम आपकी दुश्मनी नहीं निकालेंगे, और उसको यहाँ पे ये एश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है
कि अगर लेट्स सपोज अपील कर रहा है तो वो उसका राइट है अपील पर, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है मैनेजर के लिए भी, उसके इमीडिएट बॉस के लिए भी और एचआर के लिए भी। तो अगर वो अपील कर रहा है तो मैनेजर को ये नहीं करना चाहिए कि वो ग्रजेस बीच में रखे और वो बाद में कहे कि अच्छा ठीक है अभी तो तुम अपील कर रहे हो लेकिन नेक्स्ट टाइम के खाते मैं देखूँगा। तो ये वाला एटीट्यूड जो है वो वेटर की तरफ से नहीं होना चाहिए। तो एचआर का काम है कि वो अश्योर करवाए इस चीज़ को कि जो भी प्रोसेस होने जा रहा है वो वेटर को या तो ना पता हो या फिर जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन हो, ताकि जो एम्प्लॉय है उसको भी ठीक तरीके से काम करे और वो जो ग्रजेस हैं वो भी ना रहे। इसी तरह से इट इंक्रीजेज द परसेप्शन ऑफ सिस्टम्स फेयरनेस। जब सिस्टम जो है वो फेयर होता है तो हर एम्प्लॉय जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जब उसको एश्योरेंस होती है कि ये काम जो है ये ठीक तरीके से होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक होती हैं। देन एम्प्लॉयज़ कैन क्वेश्चन टू टाइप्स ऑफ इशूज़। यहाँ पे दो तरह के इशूज़ जो हैं वो पूछ सकता है। एक तो जो है वो जजमेंटल पूछ सकता है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ सकता है। जजमेंटल इंक्लूड्स वैलिडिटी ऑफ एवेल्युएशन। इसके अंदर जो है वो बेसिकली वो ये देखना होता है, इसको हम श्योर ये करा रहे होते हैं कि जो हमने या उसके जो रेटर है मीन्स उसका जो इमीडिएट बॉस है जिसने परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका फिल करवाया है या उसको मार्क्स दिए हैं, तो एक तो इसमें ये होता है कि उसको ये एश्योर करा दिया जाता है कि ये जो मार्क्स हैं ये जस्टिफाइड है और उसको सारा का सारा प्रोसीजर पता होता है। और क्योंकि ये मेजरेबल होते हैं, वो रूल्स के मुताबिक जो है उसको फिल कर रहा होता है, इसलिए वो मेजरेबल भी होता है, तो वो इसलिए वो जस्टिफाइड होता है और वो जजमेंटल जो है वो क्वेश्चन जो है उसको फिल कर रहे होता है। दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि वेदर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वर फॉलोड होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं या प्रोसीजर्स हैं उनको वाकई ही फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। क्या ऐसा तो नहीं है कि पॉलिसीज़ कुछ और थी, उसने उन्हीं पॉलिसीज़ के थ्रू काम किया या प्रोसीजर्स कुछ और थे, उन्होंने उसी प्रोसीजर्स के थ्रू काम किया, लेकिन जब उसको रेट किया गया तो रेट डिफरेंट तरीके से किया गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमारे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल की। लेट मी शो यू द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ फैकल्टी। Okay जी, so this is basically the performer of concept faculty। ये मैं अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल फिल कर रहा था। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक पोर्शन जो है वो आपके कोर्सेज टॉप का है, मीन्स कि इसके जो है वो डेफिनेटली उन्होंने मार्क्स रखे होते हैं कि आपने कितने कोर्सेज एक ईयर के अंदर जो है वो पढ़ाया है। दूसरा अगर देखा जाए तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट या सुपरविजन का आ जाता है कि हमने क्या सुपरवाइज किए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स या नहीं किए। तीसरा पोर्शन जो है वो रिसर्च पब्लिकेशंस का आ जाता है। अब रिसर्च पब्लिकेशंस के अंदर जो है जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं वो देख रहे होते हैं, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कौन से जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुए हैं और उनकी रैंकिंग्स क्या हैं और वो इम्पैक्ट पब्लिकेशंस हैं या नहीं हैं और उसके अंदर आप फर्स्ट ऑथर हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारी ड्यूटीज़ आ जाती हैं, एडिशनल ड्यूटीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर हमने जो जो ड्यूटीज़ ली होती हैं वो आ जाती हैं। फिर हमारे रिसर्च फंडिंग आ जाती है या रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, अगर हमें जो है वो किसी फंडिंग इंस्टीट्यूट से जो है वो मिले हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद जो है वो HOD या इंचार्ज हमारे फिल करते हैं जिसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, जजमेंट, रिलायबिलिटी और ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एट द एंड जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है कि इसको जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं और अर्न किस तरह से करते हैं। और ये मार्क्स हम यहाँ पे देके सिग्नेचर्स करते हैं और यहाँ पे जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि इसका जो है वो इंक्रीमेंट या पहले रिव्यू जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, हाई रिव्यू होना चाहिए, एडिशनल इंक्रीमेंट होना चाहिए या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको हायर ग्रेड पे देना चाहिए। उसकी जस्टिफिकेशन होती है, कैंपस डायरेक्टर जो है वो उसको रिकमेंड करता है, रिकमेंड करने के बाद जो है वो आगे जाता है। तो ये बेसिकली हमारा जो है जो प्रोसीजर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो लेट सपोज कि अगर हम इसकी अपील करना चाह रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ अगर हम ये फील करते हैं कि ये हमारी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये ठीक नहीं हुई तो उसको अपील का प्रोसेस हो सकता है, हम अपील में जा सकते हैं और आगे जो है हम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपकी मोस्टली MNCs हैं वहाँ पे जो बहुत फेयर सिस्टम होता है और उस पर जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब जब हम रिकमेंड करते हैं, नॉर्मली जो रिसर्चर्स रिकमेंड करते हैं अपील प्रोसेस को, ये हो गया, अभी जजमेंटल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया,
लेकिन उसके बाद when we go for the recommendations what how actually the appeals process works, मतलब जजमेंटल तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गया, लेकिन ये काम कैसे करेगा, क्या काम कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए जो है वो रिसर्चर्स ने जो है वो बेसिकली दो तरीके बताए हैं, दो लेवल्स बताए हैं कि जिसके थ्रू वो अपील करनी चाहिए. The very first level one is basically it includes HR reviews facts, policies and procedures. Then it may include HR reports to supervisors and employers, and then HR attempts to negotiate a settlement. अब इसके अंदर जो है ये बेसिकली लेवल वन के अंदर जो है वो हमने तीन चीज़ें देखी. इसमें एक तो ये है कि HR जो है वो रिव्यू फैक्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर पॉलिसीज आ जाती हैं, इसमें प्रोसीजर आ जाते हैं. तो उसके थ्रू जो है वो HR रिव्यूज़ करता है कि हमारे फैक्ट्स पॉलिसीज प्रोसीजर क्या थे और उसने उसके मुताबिक काम किया या नहीं किया. फिर उसके बाद HR रिपोर्ट करता है सुपरवाइज़र को या एम्प्लॉय को. फिर HR अटेम्प्ट करता है टू नेगोशिएट अ सेटलमेंट. अब उसके अंदर जो है वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि क्या सेटलमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है. लेवल टू के अंदर अगर लेट्स सपोज कि लेवल वन के अंदर तो सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर वो लेवल टू के अंदर जाता है. लेवल टू के अंदर जो है वो आर्बिट्रेटर्स होते हैं. बेसिकली इट इज़ अ पैनल ऑफ पीयर्स एंड मैनेजर और हाई लेवल मैनेजर मेक्स अ फाइनल डिसीजन. अब इसमें मैं आपको जो है वो आर्मी की एग्जांपल देता हूँ. अब आर्मी में लेट्स सपोज आप ने जो है वो अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हुए, लेकिन फाइनल जो उनका होता है SSP होता है, अब ISSP में भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब मेडिकल आता है तो मेडिकल के अंदर जो है वो आप सेलेक्ट नहीं होते. तो उसमें क्या होता है, उसमें अपील का राइट होता है. आप जो है वो अपील कर सकते हैं. अपील के अंदर जो है वो पहले पैनल बैठता है, पैनल बैठ के वो देखता है कि वाकई ही ये उसमें वाकई बीमार था और इस वजह से उसको नहीं रखा या कोई और वजह थी. अब अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो उसमें जो है वो एक जर्नल लेवल का जो डॉक्टर है वो वहाँ पे आता है, मतलब जो हाई कैटेगरी के अंदर जो होता है, तो वो अपील को सुनता है और वो सुन के फिर देखता है कि वाकई ही ये फैसला ठीक हुआ है या गलत हुआ. तो अगर तो गलत हुआ होता है तो वहाँ पे वो दोबारा उसको ठीक करता है, ठीक करके उसको जो है वो जॉब पे रख सकता है. तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट अपील प्रोसेसेस होते हैं. तो उसके थ्रू जो है वो आप लेवल वन या लेवल टू पे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो आज के लिए जो है इस लेक्चर के लिए जो है वो इतना काफ़ी है. इसके बाद जो है वो मैं आपको जो है वो अगले क्वेश्चन के ऊपर लेके जाऊँगा और आपको जो है अच्छे से बताऊँगा कि हम किस तरह से इसको बिफोर इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन सी चीज़ों पर किस किस तरीके से जो है वो ध्यान कर सकते हैं. तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ये भी देख लीजिएगा और इसको जो है वो हम डिस्कशन क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.